ओके तो कल मतलब लास्ट सेशन में व्हाट वी सॉ वाज हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस तक देखा था। तो कल हमने हुक्स लॉ देखा पहले। हुक्स लॉ वाज नथिंग बट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन वी सॉ कि हमारे पास तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं। वन रिलेटेड टू लेंथ जिसको हमने कल इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ या फिर यंग्स मॉडुलस बोला था, राइट? तो the next thing that we want to learn today is bulk modulus। इसको हम लोग मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो है इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट्स इट, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया, इन दिस केस यू विल बी टेकिंग ईदर अ क्यूब और यू विल बी टेकिंग अ स्फीयर। हमने जब बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन जब हमने डिफाइन किया था या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस हमने जब डिफाइन किया था, तो आपको याद होगा वी स्टार्टेड विथ टेकिंग अ क्यूब। हमने पहले एक क्यूब लिया था और इस क्यूब का वॉल्यूम है v, और हमने इस क्यूब को एक लिक्विड में इंसर्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि हर एक साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए, हर एक साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज होना चाहिए, है ना? हमको जब कंप्रेस करना होता है, जब वॉल्यूम चेंज करना होता है, तो या तो ऑल साइड से आप उसको फोर्स लगाओ फॉर एलोंगेशन, या फिर आप ऑल साइड से उसको फोर्स लगाओ फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेस करने के लिए हमको ऑल साइड से फोर्स लगाना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम अप्लाइंग फोर्स, अगर मैंने क्यूब को उठा के सीधा एक लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर जो होगा दैट विल चेंज द वॉल्यूम। तो जो न्यू वॉल्यूम होगा that will be v minus dv, where dv is the change in volume. So let's say the cube gets compressed, cube का compression हो गया, तो we will have new volume which will be v minus dv, क्योंकि there is compression। तो original volume जो था it was v, और नया वॉल्यूम जो है it is v minus dv, where dv is the change in the volume, right? और किसने चेंज किया? तो वॉल्यूम, ये प्रेशर ने चेंज किया। वी अप्लाइड अ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। जरूरी नहीं है कि आपको क्यूब ही लेना है, आप सेफली बोल सकते हो दैट कंसिडर अ स्पीयर मेड अप ऑफ रबर। तो स्पीयर भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, फिजिक्स डजंट चेंज। स्पीयर भी लोगे तो ऑल साइड से कंप्रेशन होगा, तो ऑल डायरेक्शन से कंप्रेशन होगा, तो वॉल्यूम विल चेंज, राइट? अगर आपको याद है, वॉल्यूम स्ट्रेस इस केस में हमारा आया था डीपी, हमने डिराइव किया था ये। और वॉल्यूम स्ट्रेन जो आता है, वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट माइनस डीवी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस क्यों आया? बिकॉज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इसके लिए आया, राइट? तो बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन टू दैट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस के इज नथिंग बट dp अपॉन माइनस dv बाई v, मतलब ये आ गया आपका माइनस v dp बाई dv। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो माइनस साइन हम नहीं लिखेंगे, सिंपल, राइट? विल जस्ट स्किप नेगेटिव साइन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यंग्स मॉडुलस हो या फिर बल्क हो या फिर कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबके
यूनिट्स सेम आते हैं, डायमेंशंस सेम आते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडुलस जब बोला है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस के यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। तो बल्क मॉडुलस के भी यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशंस आएंगे m1l-1 t-2 t-2, right? These are dimensions of bulk modulus. अब we define something which is called as compressibility. So compressibility is the ratio of reciprocal of, not ratio of, it is the reciprocal of bulk modulus. तो 1 upon bulk modulus is compressibility. मतलब सिंपली ये आएगा आपका माइनस dv अपॉन vdp और यूनिट्स आएंगे मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और डायमेंशंस आएंगे m-1l+1 t+2, राइट। देखो इफ यू गो फॉर इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो क्या होता है कि हर एक प्रैक्टिकल करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वाइवास होती है। एंड इन वन सच वाइवा वी वर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू बल्क मॉड्यूलस एंड नॉर्मली आई यूज टू डू इट दिस वे। एक प्रैक्टिकल हुआ तो पहले उसका वाइवा, दो वाइवा क्लियर हो गए तो सेकंड प्रैक्टिकल करना अलाउड होगा आपको। तो आई आस्क्ड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो आप लोग 12th में ही सीख के आते हो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो किसी भी टाइप के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस पता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब क्या होता है इसका। तो देखो क्या है कि हमने एक बॉडी को प्रेशर अप्लाई किया ऑल साइड से, तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। तो कंप्रेसिबिलिटी का सीधा मतलब ये होता है हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। अगर मैंने 1 पास्कल से प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, राइट। हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, दिस इज व्हाट इट मींस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट अ बॉडी इज मूविंग, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज स्पीड, है ना। तो ये चीजें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। एनीवेज, तो वी विल रिपीट वंस अगेन एंड देन वी विल नोट इट डाउन। ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है। तो सिंपल है, बल्क मॉड्यूलस is the modulus of elasticity related to change in volume of an object. It is also called as elasticity of volume. It is a ratio of volume stress to that of volume strain. So volume stress और volume strain का ये ratio है basically. तो bulk modulus is nothing but volume stress upon volume strain. Volume stress upon volume strain. वॉल्यूम स्ट्रेस, अगर आपको याद होगा कि हमको एक ऑब्जेक्ट का, एक रबर क्यूब का, रबर स्पीयर का अगर हम लोगों को वॉल्यूम डिक्रीज करना है, मतलब उसको कंप्रेस करना है, तो हमको ऑल साइड से इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम लोग फोर्स लगाएंगे हर डायरेक्शन से, हम लोग बोलते हैं कि लेट अस इंसर्ट दिस स्फेरिकल रबर बॉल और क्यूब इनसाइड अ लिक्विड। तो लिक्विड क्या करेगा, हर साइड से प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब देयर इज चेंज इन प्रेशर एंड दिस चेंज इन प्रेशर लीड्स टू चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम स्पेसिफिकली। तो इफ यू रिमेंबर, वॉल्यूम स्ट्रेस हमने जब डिराइव किया था तो ये आया था dp और वॉल्यूम स्ट्रेन था माइनस dv बाई v, सो विच इज इक्वल टू माइनस v dp बाई dv। ओके, तो ये आ गया आपका बल्क मॉड्यूलस, सिंपल है, नथिंग। डायमेंशंस m1 l-1 t-2, SI यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
फिर 1 upon bulk modulus मतलब compressibility, that is the ratio of bulk, that is the reciprocal of the bulk modulus. तो units meter square per Newton, dimensions m minus 1 L1 T plus 2, and then basically it is bulk compressibility की बात कर रहा हूँ. Compressibility tells you how much is the change in volume per unit change in the pressure of the body in the body, right? That's it. So let's complete theoretical part. बहुत easy concept है और अच्छा concept है. So it is the modulus of elasticity. It is the modulus of elasticity related to change in volume of an object, change in volume of an object due to the applied deforming force. Of course, अगर आप force नहीं apply करोगे तो कोई भी body deform नहीं होगी, due to the applied deforming force. Okay, hence it is called as elasticity of volume. It is also called as elasticity of volume. Elasticity of volume. Right. And bulk modulus is a property which is related to solids, liquids and gases. तो हर एक के लिए applicable है ये. So bulk modulus of elasticity is a property of solids, liquids and gases. Bulk modulus of elasticity is a property of solids, liquids and gases. Right. Simple. So if we take a rubber cube and completely immerse it in a liquid, it will be uniformly compressed from all sides. Okay, so if a rubber cube is completely immersed in a liquid, it will be uniformly compressed from all sides. Suppose this compressive force is F. Suppose this compressive force is capital F, let us say. Let the change in pressure be dP. Change in pressure be dP, and change in volume, I would prefer to say decrease in volume be dV. Okay, if the original volume
of the cube is V if the original volume of the cube is V, then volume strain is defined as change in volume upon original volume. Volume strain is equal to change in volume upon original volume. Okay, so this is equal to minus dV by V. Good. Also, what we know is volume stress is given by, and of course negative sign means the volume is decreasing. Okay, so negative sign indicates that there is decrease in volume. There is decrease in volume, right? Okay. Also, volume stress is equal to dP. हमने ये पहले करके रखा है, तो we are not going to do this thing in detail again. So bulk modulus is defined as the ratio of volume stress to that of volume strain. Bulk modulus K is defined as the ratio of volume stress to that of volume strain to volume strain. Therefore, bulk modulus K is equal to volume stress upon volume strain. तो बहुत easy सा topic है, there is nothing much in this. तो K is equal to, you can write dP by minus dV by V, that is minus V dP by dV. Okay, so you have bulk modulus as minus V dP by dV. If I want to just write down numerically, considering just the magnitude, bulk modulus is V dP by dV. SI units of bulk modulus are SI units of bulk modulus K are Newton per meter square and dimensions तो सबके सेम ही है, स्ट्रेस के भी वही है, मॉडुलस के भी वही है, m1 l-1 t-2, right? And as you remember, Young's modulus हमको बताता था how much is the resistance to a change in length, है ना? तो Young's modulus measures the resistance offered by the material to change in length. यहाँ पे bulk modulus measures the resistance offered by substance can be liquid, gas or solid. Resistance offered by substance to the change in its volume, right? So
bulk modulus measures the resistance offered by solids, liquids or gases to the change in their volume, right? Then compressibility क्या होता है वो देखते हैं. ये भी easy है. Compressibility is nothing but the reciprocal of bulk modulus. Okay, so compressibility, as I told you, it is the reciprocal of bulk modulus, and it measures how much is the change in volume per unit change in the pressure. So the reciprocal of bulk modulus of elasticity is called as compressibility of the material. Compressibility of the material. It's called as compressibility of the material. Okay, so compressibility is nothing but 1 upon bulk modulus. Compressibility is equal to 1 upon bulk modulus. So you already know what is bulk modulus, तो हम लोग उसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेंगे. So it was VdP by dV, तो ये आएगा dV by VdP. इसके SI यूनिट्स आएंगे, SI units are meter square per Newton and dimensions are simple. Dimensions are m-1, L1 and t-2, t plus 2, right? So this is compressibility. Or what is the physical significance of compressibility? Let's see now. So as I told you, it basically tells you how much is the fractional change in volume per unit change in pressure. So compressibility is a fractional change or decrease, क्योंकि you know this is negative, है ना? So that's why you can say, और compress ही कर रहे हो, यहाँ पे compress कर रहे हो तो decrease ही होगा volume. Compressibility is the fractional decrease in volume, that is minus dV by V, per unit increase in pressure. मतलब मैंने 1 पास्कल से प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ, पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर. बाय द वे, आपको पता होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको पास्कल बोलते हैं, तो SI यूनिट विल बी पास्कल इनवर्स आल्सो, राइट? गुड. So you should know this much, right? All right.
Alright, so we'll do some numericals, solved examples now. So we'll start with example 6.1. A brass wire of length, जब वायर ये वर्ड यूज हुआ हो तो समझ लेना कि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यंग्स मॉड्यूलस. So a brass wire of length 4.5 meter with cross-sectional area of 3 into 10 power minus 5 meter square and a copper wire of length 5 meter with a cross-sectional area of 4 into 10 power minus 5 meter square are stretched by the same load. The same elongation is produced in both the wires. Find the ratios of Young's modulus of brass and copper wire. Easy question है. You have been given length of brass wire LB 4.5 meter, cross-sectional area of brass wire 3 into 10 power minus 5 meter square, length of copper wire as 5 meter, and area of cross-section of copper wire as 4 into 10 power minus 5 meter square. They are stretched by the same load, मतलब force on brass wire and force on copper wire are same. Elongations produced in the wire are same, मतलब delta L for brass and delta L for copper, these are same. You are supposed to find out the ratio of Young's modulus of brass to that of copper, and you are supposed to use the formula of Young's modulus. So easy है. फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपको पता होना चाहिए. यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस आपने डेफिनेटली लिखा था mg/l अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, लेकिन स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया भी तो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यंग और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल. तो ये भी यंग्स मॉडुलस है. फिर आप सिर्फ एफ की जगह पे mg लिखते हो, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखते हो, तो इट्स द सेम थिंग. मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि द थिंग इज फोर्स फोर्स कैंसिल हो जाएगा व्हेन आई टेक रेशो, इसलिए जरूरत नहीं है. तो इजी है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास टू दैट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स on brass, length of brass upon area of brass, delta L of change in length of brass upon force on copper wire, area of copper wire, length of copper wire, upon delta L of copper wire. Elongations are same, cancel, forces are same, cancel. मतलब ultimately what you have is YB by YC is equal to, simple है, LB by LC and AC by AP. Length of brass is 4.5, length of copper is 5, area of copper wire is 4 into 10 power minus 5, and that of brass is 3 into 10 power minus 5. Cancel. This is 9 za, this is 10 za, this is 1 za, this is 3 za. So 12 by 10, 12 by 10 is 6 by 5, मतलब 1.2 है basically, right? So this is 1.2. 12 by 10 is 1.2 or 6 by 5. So this is the ratio of Young's modulus of brass wire to that of copper wire. Simple था. Next question. A wire of length 20 meter and area of cross section 1.2 5 into 10 power minus 4 meter square is subjected to a load of 2.5 kg. kg WT लिखना चाहते थे ये लोग, यहाँ पे लिख नहीं पाए WT, where 1 kg WT is 9.8 न्यूटन. वो तो आपको पता ही है. kg WT वेट में अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है उसको, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना. The elongation in the wire is 10 power minus 4 meter. Calculate the Young's modulus. तो ये भी easy है. So what is given to you is length of wire is 20 meter, area of cross section of wire is
1.25 into 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। लोड मतलब फोर्स मतलब mg बेसिकली, ये है 2.5 kgWt। kgWt को कन्वर्ट करोगे तो 2.5 into 9.8, 2.5 into 9.8 न्यूटन हो जाएगा ये। मतलब दिस फोर्स इज, I'll not multiply this because maybe cancellation में काम में आएगा। Elongation मतलब डेल्टा L दिया है 10 पावर माइनस 4 मीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस, तो आपको y फाइंड करना है। फिर वही बात कि फॉर्मूला इज प्रिटी सिंपल। फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू FL by A delta L। तो extremely simple case this is, because you just have to put values। तो y is equal to F is 2.5 into 9.8 into length is 20, good, upon area is 1.25 into 10 power minus 4 into delta L is 10 power minus 4। इजी है, 1 जा 2 जा, तो 2 into 2 4 into 9.8। मैं ऐसा करता हूँ, दिस इज नथिंग बट 98 into 4, 98 into 4 मतलब 100 into 4, 400 में से 8 गए, तो इट इज नथिंग बट 392। ओके, सो दिस इज 392 ऊपर और 10 पर प्लस 8 नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3.92 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि नॉर्मली यंग्स मॉडुलस हमेशा 10 पावर 10 या 10 पावर 11 में लिखा जाता है, इसलिए ऐसा एडजस्टमेंट किया है। यंग्स मॉडुलस और एनी मॉडुलस इज नॉर्मली 10 पावर 10 और ग्रेटर। ओके, तो इसलिए एडजस्टमेंट किया है, दैट्स इट। तो दिस वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। I mean, it is quite simple question, right? All right, next question, 6.3. A metal cube of side 1 meter is subjected to a force। तो लेंथ ऑफ क्यूब आपको दिया है, L आपको दिया है 1 मीटर। The force acts normally on the wall surface of the cube and its volume changes by, मतलब dV आपको दिया हुआ है 1.5 to 10 power minus 5 meter cube। The bulk modulus of metal is 6.6 into 10 power 10 Newton per meter square। चेंज, कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर चेंज फाइंड करना है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनिशियली स्टार्टिंग से ही मैंने क्यूब का ही केस लिया था। आई हैव नेवर टेकन द केस ऑफ अ रबर स्पीयर, राइट। सो फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, आपको याद होगा, बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू न्यूमेरिकली V dP by dV, बल्क मॉड्यूलस था ये। तो यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट dP, तो आपको मिल जाएगा dP यहाँ से, dP इज इक्वल टू K dV by V। और आपको पता होना चाहिए दैट फॉर अ क्यूब वॉल्यूम इज नथिंग बट L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ पे सब सेम ही होता है, तो L क्यूब होता है। और लकीली 1 दिया है, तो ये 1 मीटर क्यूब ही आ गया बेसिकली, तो सिंपल है ये। Therefore, change in pressure dP is K, K value is 6.6 into 10 power 10। Change in volume जो दिया है वो दिया है 1.5 into 10 power minus 5 upon this is 1। तो बहुत इजी केस है। 6.6 into 1.5 is 66 और 33। 66 and 33 is 99, 9.9 9.9 into 10 power plus 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 पावर प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इन टुडेज सेशन इज, आज हमने बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। हमको जब एक मटेरियल को कंप्रेस करना होता है
क्यूब को कंप्रेस करना है, स्फीयर को कंप्रेस करना है, तो हम उसको एक लिक्विड में डाल देते हैं सो दैट ऑल डायरेक्शन से इक्वल कंप्रेशन हो। तो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो माइनस dV by v। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, तो बल्क मॉड्यूलस के आपको मिल गया माइनस v dp by dv। न्यूमेरिकली लिखोगे मतलब नेगेटिव साइन इग्नोर करोगे तो v dp by dv। ऐसा यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल ही है बेसिकली। डायमेंशंस आर m1 l-1 t-2। What does bulk modulus measure? It measures the opposition या resistance offered by the material to change in its volume। फिर हमने देखा what is compressibility? It is just the reciprocal of bulk modulus। What does it measure? Compressibility tells you how much is the fractional change in volume per unit increase in pressure। मैंने अगर प्रेशर 1 पास्कल से बढ़ा दिया तो कितना चेंज होगा वॉल्यूम में। Then we have solved 3 examples, 2 related to Young's modulus, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, and 1 related to bulk modulus। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है that is modulus of rigidity and Poisson's ratio, and one numerical will be done in next session। We don't have that much of time to cover now, so we will be doing it in the next session।